Good morning to each and every one of you, and I hope you are doing good. You're safe, and so are your family members. Okay, it's difficult times, but times do go through, and I hope that it is without any loss of any near and dear one in your family or maybe your vicinity, because it's become quite common to hear people losing the worst battle in their life, that would be of their own life. Okay, so I hope the heavenly protection is always surrounding you. So continuing with my online duty, that would be to teach you the subject of accountancy. Today is the introduction of the last chapter called as single entry. This is absolutely ulta of what any teacher, not just Steven sir, any teacher that teaches accounts for the entire year for all the students. So guys, girls, students, what have I been teaching you the entire year? What has any teacher, any professor been teaching his or her students? अकाउंटेंसी का जो सब्जेक्ट है उसमें दो टाइप के सिस्टम होते हैं. एक होता है डबल एंट्री, जो आपको आज तक मैंने पढ़ाया. डबल एंट्री का मतलब क्या है? डबल 1 and 2, डेबिट एंड क्रेडिट. सो एवरीवन, व्हाट हैव यू लर्नड टिल नाउ? वेल, मैंने आपको सिखाया है और आपने सीखा है कि पर्सनल अकाउंट होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. और नॉमिनल अकाउंट होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. देयर इज ऑलवेज अ डुअल इफेक्ट. सो व्हाट इज द डुअल इफेक्ट? कि सर वो हिंदी में मुहावरा है ना, इस हाथ दे उस हाथ ले. सही है, तो ही तो सही होता है. सो टिल टुडे आपको जो पढ़ाया गया था ऑनलाइन पिछले 8 महीने, 7 महीने, 10 महीने, क्या था? डबल एंट्री सिस्टम. प्लीज याद रखना, व्हाट डिड आई से? डबल एंट्री. तो दिस इज बिल्कुल उल्टा. दिस इज सिंगल एंट्री. सो इट हैज टू बी उल्टा ऑफ डबल एंट्री. सो होल्ड ऑन. अच्छा, तो फिर सिंगल एंट्री हम लोग क्या करेंगे? हम लोग या तो लेफ्ट करेंगे या तो राइट. या तो हम लोग डेबिट करेंगे या तो क्रेडिट. बट वुडंट दैट बी इनकम्प्लीट? यस, दैट वुड बी इनकम्प्लीट. वेरी क्विकली, व्हाई डू many businessmen in India, okay, I would call single entry jugaad accounts. Jugaad is not English word. It's very much something connected to our desh, to our country, okay, India. Jugaad accounts. Hold on, I'll come to that. So double entry में correct क्या है? That which you have been learning, that which you will continue to learn in future. Sir, I went to 12th standard, 13th standard, 14th standard. You are doing double entry, double entry, double entry. So what is good in double entry? That is scientific accounts. If you ask a reason of a debit in double entry, the professor has to tell you, yes, this is debit what comes in, this is debit the receiver, this is debit the expenses and losses. There is reasoning. There is a reason for a debit and a credit in double entry system. So it's scientific explanation, explainable. Okay. Then it is how a businessman can find profit of business or loss of business. If you do any other system, you cannot find. Double entry में ही आपको ये जवाब मिलेगा. क्या? मुनाफे का, नुकसान का. Good things about double entry. Now, what are the bad things about double entry? It is time consuming. Very important. Achha, what does time consuming mean? Hey, I have to sit down, take a notebook, take a laptop. I've got to write. So it's time consuming. You may watch some advertisements which say
टू अ बिजनेसमैन कि वो आप लिख क्यों रहे हो, ये ऐप है ना, ये ऐप है ना, ये आपका दुकान का सारा रिकॉर्डिंग करेगा। देखो बराबर है, बट स्टिल कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको तो डालना पड़ेगा ना ऐप के अंदर, तो ही तो ऐप को पता चलेगा परचेज क्या है, सेल क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डबल एंट्री में ओके मतलब जो प्रॉपर सिस्टम ऑफ अकाउंट्स है वो टाइम कंज्यूमिंग है, उसको समझने में ऑल्सो टाइम जाता है। ऑल ऑफ यू आपको 1 घंटे में अकाउंट्स नहीं समझा, डबल एंट्री, जर्नल, लेजर, सब्सिडियरी बुक्स, ओके, फाइनल अकाउंट्स इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री। क्योंकि सर 2 था, बाई था, एडजस्टमेंट में 2 इफेक्ट्स थे, एवरीथिंग हैज बीन टिल नाउ डबल एंट्री। सो आई रिपीट माई सेल्फ, टाइम कंज्यूमिंग है भाई, बहुत टाइम जाता है सीखने के लिए, पैसा पैसा लगता है, इट्स कॉस्टली, सस्ता नहीं है डबल एंट्री सिस्टम सीखना। आपको यहाँ का फीस, वहां का फीस, अरे कितने फीस देने पड़े, 11th की पढ़ाई, 12th की पढ़ाई, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई, इट वॉज नॉट चीप। एक तो टाइम बहुत जाता है, दूसरा सस्ता भी नहीं है। नाउ डज एवरी businessmen have the time to do double entry? No. There are in India the big businessmen, the Ambanis and the Tatas, the Bianis, big businessmen. Okay, Biani is no longer a big businessman, the one that used to run Big Bazaar group. Unfortunately Big Bazaar बंद हो रहा है, but the big businessmen, they are गिना चुना, 1 2 3 4 ज्यादा नहीं है। सो द स्मॉल बिजनेसमैन जो आपके घर के 5 मिनट के डिस्टेंस पे है, वे यू गेट योर सोप, योर साबुन, ओके, योर आटा, योर धनिया, ओके, योर शुगर, योर सॉल्ट, दे आर द स्मॉल बिजनेसमैन, दे आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल। नाउ दी स्मॉल बिजनेसमैन, इफ इट इज अ डिसेंट शॉप, 2 3 साल से चल रहा है, कुछ कुछ दुकान तो सालों साल से चल रहे, 40 years, 50 years, 30 years, they are very busy, they don't have time. क्यों? There are many customers who are coming, they want this product, that product, वो businessman busy है, वो यहाँ पे ध्यान दे रहा है, वहां पे ध्यान दे रहा है, अकाउंट्स के लिए उसके पास टाइम नहीं है, डबल एंट्री वाले अकाउंट्स के लिए उसके पास टाइम नहीं है। तो वो करता क्या है, वो ये करता है सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री में क्या करना पड़ता है, वो सिर्फ डेबिट लिखता है, वो क्रेडिट नहीं लिखता, या वो क्रेडिट लिखता है, डेबिट नहीं लिखता, तो उसका आधा टाइम बच जाता है। प्लीज नोट, देयर आर मेनी बिजनेसमैन, नॉट बिग होटल्स, देयर आर स्मॉल होटल्स। देयर इज मेनी अ टाइम्स व्हेन आई वेंट टू अ पर्टिकुलर होटल, ओके, you stay Kalina area, whenever I used to go to that particular hotel, maybe क्या खाने का था, मेंदू वड़ा, इडली, साउथ इंडियन आइटम, ओके, वो होटल में जाते थे। इट्स नॉट अ बिग होटल, मे बी अराउंड 20 people can sit in it, so it's not a very big hotel, but it is always a भरा हुआ होटल, always packed। वो काउंटर पे जो ओनर बैठता था, वो मैंने बहुत बार नोटिस किया, he did not have a big laptop, he did not have a computer, many a times I didn't even see him with a mobile, he used to only have a radio which used to keep on playing some sound music, but he had very simple a paper, you know, paper like this paper, and on that paper there used to be a clip. He just made one line in the center, left side, right side. I'm not saying debit side, credit side. Paper, not even notebook. One line, left, right. And in the left, right, you know what he wrote? He wrote the money that came from customers. And he wrote the money that he paid. He paid to the vegetable wala. He paid to the person जिससे kitchen का सामान मंगाया. So I repeat. Very simple. He was either writing money coming in and he was writing money going out. He did not write from whom the money came in. He's like, I have to ask the customer, sir, what is your name? If the name is confusing, then sir, I have to ask for spelling.
ही इज लाइक फॉरगेट इट ना, कौन करता है. मेन क्या है बिजनेस में? मनी, कैश. इन सिंगल एंट्री गाइस, a lot of focus is on what? Money. How much money came in? How much money went out? If I ask you a question, आपके घर से, किसी के भी घर से, ओके, चोरी अगर करने को चोर आए, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, बट if a robber comes, he will not try his best. अरे this bed, so nice bed, let me take it. I want to sleep on it in future. AC, so nice, cooling AC. Let me take it. Okay. Fridge, so big fridge, double door fridge. Let me take it. Cupboard, so big cupboard. Let me take it. नहीं, मुश्किल है. He can't take it. उसको पूरा IPL टीम लाना पड़ेगा. So, चोरी किस चीज की होती है? मनी. गोल्ड का पॉसिबल है? Yes. But they always look for money, because they can immediately go and spend it. Okay, so I repeat myself. Cash is very important. Businessman को भी पता है. तो businessman क्या करता है? Single entry में he only writes cash. It came from where? Forget it. Cash went to whom? Forget it. Only one angle is written. The other angle, forget it attitude. क्या हो जाता है? You know, there are two ways to cross a road. There are two types of road. What is that? Arrow coming, arrow going. Hey, that is a vehicle coming and a vehicle going. That's called as a two-way road. I repeat myself. This above me is a two-way road. अच्छा. What is this? Okay. Something else turned up. Okay, so that side is a two-way road. It is a difficult road to cross. You have to cross half the road, then you have to look at a different direction, then you have to cross half the road. So hold on, there is something called as a one-way road. So on a one-way road, एक गाड़ी ना एक ही डायरेक्शन में आएगा, या तो लेफ्ट से आएगा या तो राइट से आएगा, दोनों डायरेक्शन में नहीं आएगा. It is easy to cross. Double entry in accounts is a two-way road. There is this direction and that direction. दोनों तरफ पे ध्यान देना पड़ता है. But single entry is a one-way road. एक ही तरफ पे ध्यान देगा, दूसरी तरफ पे गाड़ी आने वाला नहीं है. Now, double entry is the more difficult accounts. Single entry, you know, मैंने आपको एक वर्ड बोला. मैंने क्या वर्ड बोला आपको? जुगाड़. What is जुगाड़? It is a Indian, a देसी वर्ड जो हमारे इंडिया के लिए बहुत कॉमन है, जहां पे जो डिफिकल्ट काम है वो थोड़े नॉट इजी स्टाइल में, थोड़े सस्ते स्टाइल में हो जाता है, काम हो जाता है, बट इट विल नॉट लुक वेरी एलिगेंट. What does that mean? If you look above, okay, you would see some gentleman who is balancing the mother on one side, the wife on one side. तो कि झगड़ा नहीं होना चाहिए. जुगाड़ का काम है, क्योंकि दोनों को तो बिठा नहीं सकता है वो एक साथ में बाइक पे. Then you can see this what photograph, जहाँ पे the cooling is going from one AC to this room as well as it is going to that room. सस्ते में, if you want a luxurious seat, गाड़ी का सीट लगा लो. This is all examples of. So the juta becomes the stand for keeping the mobile. If you are scared about your children falling from the swing, hey, you use this, गिरेगी नहीं वो. So I repeat, these are scenes. Okay, so the above uncle has a stand for his belly. Okay, so these are just scenes of something just behind me. If I move out from here, a very well-known teacher, okay, who used the shelf of the fridge, okay, to do as a stand so that she could record online lectures and send to her students. So I repeat myself, these all things that you see behind me, that you see besides me, are what? They are nothing but
something that we call as jugaad. Okay, for some reason this is popping up again and again. So what are we doing today? हम लोग भी जुगाड़ अकाउंट्स करेंगे. मतलब क्या है? देखो, अकाउंट्स तुम क्यों करते हो? एवरीबॉडी, अकाउंट्स में इसलिए करता हूं ताकि मुझे आंसर पता चले. क्या आंसर चाहिए तुझे? मुझको प्रॉफिट या लॉस का आंसर चाहिए. उसके लिए क्या करने का? उसके लिए फाइनल अकाउंट्स करना पड़ता है. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, एसेट, लाइबिलिटी. उतने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास. तो फिर क्या करेंगे? तो एक काम करते, हम लोग सिंगल एंट्री करते, शॉर्टकट अकाउंट्स. नाउ होल्ड ऑन, हाउ डू वी डू सिंगल एंट्री? इट हैज अ वेरी वियर्ड तरीका, अजीब तरीका, बिकॉज इट इज नॉट साइंटिफिक अकाउंट्स. तो डोंट एक्सपेक्ट रीजन एंड लॉजिक. काम हो जाएगा. दैट इज द रीजन आई एम कॉलिंग इट जुगाड़. काम हो जाएगा. सो एट द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर, एट द एंड ऑफ अ फर्स्ट प्रॉब्लम, क्या आंसर आएगा? नेट प्रॉफिट. अरे, नेट प्रॉफिट आएगा विदाउट फाइनल अकाउंट्स? यस, नेट प्रॉफिट आएगा विदाउट फाइनल अकाउंट्स. तो मेनी ऑफ यू में से, सर फिर फाइनल अकाउंट्स काहे को पढ़ाया अगर ये इजी वाले चैप्टर में हो जाता? देखो, सब लोग सब टाइम के लिए थोड़ी फाइनल अकाउंट्स कर सकते हैं. सॉरी, सिंगल एंट्री कर सकते. सिंगल एंट्री जो बिजनेसमैन करता है ना, उसका पूरे साल काम चल जाता है, बट एट द एंड ऑफ द ईयर ही गेट्स अ नोटिस फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एंड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टेल्स हिम पे टैक्स. Taxes to be paid on profit. Profit you can only find with what? Double entry system. So that businessman at the end of the year, he's running to this chartered accountant, that chartered accountant, and he is going to the accountant and he's requesting the accountant, can you please find out my profit? I did single entry, so I did incomplete accounts. अब मुझको पता नहीं ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाने का, मैं बना नहीं सकता हूं. मुझको पता नहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे, मुझको पता नहीं फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाने का. देन यू एज द अकाउंटेंट हैव टू हेल्प हिम. यू हैव टू मेक आउट ऑफ द मटीरियल अवेलेबल समथिंग दैट विल मेक सेंस एंड दैट विल गिव हिम हिज आंसर ऑफ नेट प्रॉफिट. सो गाइज, आवर फर्स्ट क्वेश्चन टुडे is this, and I hope I had asked you to keep this format behind me available. You will see this nice looking car. Don't worry, अभी ये गाड़ी तुमको बनाने का नहीं, तुमको गाड़ी नहीं बनाने का, ओके, बट तुमको बाकी का डेफिनेटली बनाने का है. तो वेरी क्विकली, इफ यू कैन प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. 1, format ready. 2, present sir. I get started, okay, and I'll explain to you little by little. What is that? What is this? What is that? Everything थोड़ा थोड़ा करके मैं explain करता हूँ. But very quickly, you first make sure that your format is ready. You tell me in the comment box. I will start to read the question, which in itself is a little bit weird. Solution भी थोड़ा अलग है, अजीब है. Question भी थोड़ा अलग है, अजीब है, क्योंकि ये जो chapter है वो अलग है, अजीब है. Okay, guys, question. क्या करने का है? कुछ नहीं, पढ़ो मेरे साथ में. सो सिंगल एंट्री में क्या होता है? एक ऐसा बिजनेसमैन होता है जो बिजनेस अच्छा कर रहा है, बिजनेस का प्रॉब्लम नहीं है उसका, उसके पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं, उसके पास टाइम नहीं है, तो उसके पास डबल एंट्री करने के लिए टाइम नहीं है. अगर एक रास्ते पर एक बिजनेसमैन है जो भाजी बेच रहा है, जो केले बनाना बेच रहा है, जो समोसा बेच रहा है, जो चाइनीज भेल बेच रहा है, जो गोलगप्पे बेच रहा है, जो भेल बेच रहा है, जो पानी पूरी बेच रहा है, दे आर नॉट क्राइंग अबाउट देयर बिजनेस. दे आर हैप्पी, दे आर लाइक गुड सर, अच्छा चल रहा है. बट इफ यू टेल देम, अरे तुम बिजनेस करते हो तो तुमको अकाउंट्स करना चाहिए, तुमको रिकॉर्ड रखना चाहिए, तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल, उन लोग को गुस्सा आएगा, उन लोग तुमको 2 कान के नीचे बजाएगा, बोलेगा कहां से आ गया तू, हाँ क्या बोल रहा है तू, ये सब चीज हमारे पास टाइम नहीं है. यस, उनके पास टाइम नहीं है, उन लोग शॉर्टकट करते हैं. हाँ, प्रॉब्लम क्या होता है? जब उन लोगों को या काफी लोगों को टैक्स देना पड़ता है, तब टैक्स के कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाता है. सो इफ यू रीड अबाउट विथ मी, क्या बोला? जेठालाल, वेरी फेमस, इंडिया में तो डेफिनेटली वेरी फेमस. अ ट्रेडर, अ शॉपकीपर, डज नॉट कीप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो स्टार्ट में ही बोला
सम चालू नहीं होगा, स्टार्ट में बोला ए दिस भाई साहब ही डज नॉट कीप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हाउएवर ही फर्निशेस द फॉलोइंग डिटेल्स दैट ही रिमेंबर्स। उसको सब याद नहीं है, उसको थोड़ा थोड़ा याद है, थोड़ा थोड़ा। ओके होल्ड ऑन, व्हाट डज ही रिमेंबर? 1st April 19, 31st March 20. Now I repeat, what are these dates? 1st April 19 is the first day of the year. 31st March 20 is the last day of the year. In between there are 12 months. Okay, we do final accounts for 12 months. I hope you remember. We are not doing single entry, okay, as final accounts. No. You'll understand why am I trying to say that. Okay. Cash at bank. You have two things. You have opening, closing. First day, last day. Opening, closing. बीच का बताया नहीं कुछ भी. Cash at bank. I think that is an asset. Cash in hand. I think that is also an asset. Stock in trade. Asset. Stock is goods. Debtor. Debtor are customers. Asset. Equipment. Equipment are machines. Asset. Creditor. That's a supplier. Liability. Furniture. That's an asset. I repeat, all of you, if you have a little idea about final accounts, about the markings of final accounts, about assets and liabilities, तो ये चैप्टर तुमको 50% पता है. You already know this chapter 50%. Okay, I'll explain to you in some time. So I have got 2 cash at bank, opening, closing, 2 cash in hand, opening, closing, 2 stocks, opening, closing, 2 debtors, opening, closing, 2 equipment, 2 furniture, 2 everything, opening, closing. During the year, so now during the 12 months, Jethalal, he is the businessman, introduced rupees 3,000 as further capital. Please make sure you're reading that. So what happened during the year? Jethalal, who is the owner of the shop, he bought 3,000 in the business. He bought. We call it capital. And withdrew 5,000 as drawing. He took for his घर का use, for his बीवी बच्चे लोग का use, मम्मा पप्पा use, घर का use, drawings. Write off meaning subtract, remove. Depreciation on furniture at 10%. Now hold on. You have heard this. You have done this in every problem of final accounts. Every problem of final accounts. हाँ, तो it is the same जो तुमको यहाँ पे करना है. जो फर्नीचर है, ऊपर देखो फर्नीचर है, उसको क्या करना है? स्टार मार्क. बट प्लीज अंडरस्टैंड, सुनो, 2 फर्नीचर है सर. पहले 20,000 है, वो ओपनिंग है, और 20,000 क्लोजिंग है. तो ये जो डेप्रीसिएशन है उसका स्टार मार्किंग कहाँ पे करना है? प्लीज नोट, स्टार मार्किंग मतलब एडजस्टमेंट कभी भी ओपनिंग में नहीं होता, क्लोजिंग में होता है. मतलब ये जो 20,000 है क्लोजिंग, उसको स्टार करना है, उसमें एक लाइन खाली रखना है. एंड इक्विपमेंट थोड़ा ऊपर है, उसके भी क्लोजिंग में आपको स्टार करना है, मतलब एक लाइन खाली रखना है. सो एवरीवन ओपनिंग में क्यों नहीं एडजस्टमेंट करने का? प्लीज सोचो ना, आप समझो. अगर आपके घर में आपने कुछ नया खरीदा, आज खरीदा, टुडे, आज के आज खरीदा, ओके, विल दैट ब्रिंग अ डिफरेंस इन योर हाउस? आज के आज? नो, इट विल नॉट. ओके, एग्जाम्पल, मेरे घर पे my dear wife prepares dahi. Many of you may have an idea, or many of you mammas may have an idea. Okay, मम्मी को पूछ लेना घर पे दही कैसे बनाते. ज्यादा टाइम नहीं जाता है. जो अपना नेचुरल दही है, ओके, जो ब्रांडेड नहीं होता, ओके, जो नॉर्मल दुकान के अंदर नेचुरल मिलता है बिना कोई ब्रांड का, वो आप थोड़ा सा रखो, उसके अंदर आपको दूध मिलाना है. और मैं टीच नहीं कर रहा, बता रहा हूं. आज रखोगे, उसको हिलाने का नहीं, डोंट शेक, कीप इट. ओके, इट हैज टू बी स्टेडी. एंड मे बी आफ्टर 1 डे वो दूध से दही बन जाएगा. इट टेक्स टाइम. चुटकी बजा के होता नहीं है. सो इफ यू ब्रिंग टुडे अ कार,
After 1 week, 10 days, you will get the benefit of the car, of the scooter, of the refrigerator, of the AC. On the first day, you will not get any benefit. It takes little time. It takes little time. What am I trying to tell you? First day pe changes don't happen. Plus and minus don't happen. Changes happen after time goes ahead. अगर एक घर के अंदर शादी करके एक बहू आती है, ऑन द फर्स्ट डे वो बहू के वजह से चेंजेस होंगे नहीं, बट कल होगा, परसों होगा. क्या चेंज होगा? देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ द टाइम शी गेट्स अप, शी गोज टू स्लीप, शी वांट्स टू सी हर movies, her serials on the TV. So the saas, sasur, the husband have to make changes. They have to make changes. But as time goes ahead, changes happen. First day पे नहीं होता. तो बच्चों प्लीज याद रखिए, adjustment मतलब change, और वो बदलाव स्टार्ट में नहीं आएगा 1st April. No. Always 31st March closing after 12 months. Okay. Last, prepare opening and closing statement of affair and also statement showing profit and loss. Right now, girls, guys, students, my good friends, don't worry about this. ये what is statement of profit and loss? You worry, ये क्या है? Statement of affair, and there are 2 times. The affair is happening opening and closing. Please note, in this chapter, nothing is perfect. कोई भी चीज perfect नहीं, सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ है. So, if you remember, एकदम ऊपर, however, Jethalal furnishes the following details that he remembers. So, if you are the accountant and you are talking to Jethalal, तुम्हारे पास क्या एसेट है? सर 1 मिनट रुको, मैं याद करता हूं. मेरे पास ना सर ऐसा फर्नीचर है, मेरे पास ना सर ऐसा इक्विपमेंट है, मेरे पास ना सर इतना क्या है, कस्टमर है. होल्ड ऑन. He remembers. Does he remember everything? No. He may have forgotten something. So, if you take the assets and liabilities and you prepare a balance sheet, do you think you are preparing a correct balance sheet? No, because he may not remember everything. He has done shortcut accounts. You cannot, with the help of assets and liabilities, prepare a balance sheet. You prepare something similar to a balance sheet. That is called as statement of affair. So, I repeat. What is a statement of affair? It is a balance sheet, but a balance sheet is perfect. Asset liability match. Perfect. This information is not perfect. So you don't prepare a balance sheet. Instead of that, you prepare something called as, which looks like a balance sheet. And I repeat, वो क्या है? उसको कहते हैं statement of affair. So please read here. Opening statement of affair. Why is it a affair? ये word क्यों use किया है? Because affair के लिए 2 लोग चाहिए ना, 2 लोग. In business, what are the 2 things? Asset and liabilities. Asset, liability. That is called a statement of affair. There are 2 affairs. Opening and there is an affair in the closing. So opening asset liability, closing asset liability. Give me 5 minutes. I'll explain ke in this chapter the concentration is more on asset liability. It is less on income expense. In fact, in this chapter, you will be like, sir, where is salary? Where is interest, commission? We used to do that, many words before production, after production. ऐसा कुछ यहाँ पे दिखता नहीं है. Please note, the businessman doesn't remember everything. Income expenses are so many, इतने सारे, everyday income expenses. Asset liabilities are less. He remembers little bit of assets and liabilities. Don't expect him to remember income and expenses. Don't expect him to, because उसका list इतना लंबा है. If your mama gives you one day, what? Go to the market and buy. She will give you a long list. And you're like, अरे this 200 grams, 250 grams, this 1 kg, 5 kg. How will I remember? It's difficult. एक दिन का तू याद नहीं रखेगा, बिजनेसमैन को 12 महीने का क्या याद रहेगा? तो सिंगल एंट्री में इनकम एक्सपेंस पे ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि उसको याद करना बहुत मुश्किल है. क्या कोशिश की जाती है? उसके जगह पे
एसेट लाइबिलिटीज लिखा जाता है और उसमें से आंसर ढूंढा जाता है। वो कैसे होगा वो मैं आपको थोड़े टाइम में बताऊंगा। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, एट द एंड ऑफ द सम हमको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा, ओके, बट फाइनल अकाउंट्स हम लोग नहीं करेंगे। क्यों? वी कैन नॉट प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट, वी कैन नॉट प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास नहीं है। हमारे पास एसेट है, लाइबिलिटी है, उसमें से भी हम बैलेंस शीट नहीं बना सकते हैं। क्यों बैलेंस शीट नहीं बना सकते हैं? क्योंकि हमारे पास सारे एसेट लाइबिलिटीज नहीं है। कहाँ है? वेरी स्पेसिफिकली जेठालाल को जो याद था उसने हमको बताया, हमने वो इंफॉर्मेशन दिया, उसमें से हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। सो गाइस गर्ल्स, वी आर स्टार्टिंग अ सॉल्यूशन। कैसे स्टार्ट करेंगे, कब स्टार्ट करेंगे? हम लोग ना 1 अप्रैल 19 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में हम लोग 31 मार्च 20 पे आ जाएंगे। तो हम लोग अभी फर्स्ट डे से स्टार्ट कर रहे हैं। सो विथ मी गाइस, अगेन डोंट वरी अबाउट दिस गाड़ी, ये गाड़ी हम लोग चलाने वाले हैं थोड़े टाइम में। ओके, सो गाइस विथ मी, क्या लिखने का है? पहले ना हम लोग 1 अप्रैल 2019 सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहला आइटम क्या है? कैश एट बैंक। ये क्या है? ये एसेट है 6000। 31 मार्च 20 मत देखो, एवरीबॉडी मत देखो, 6000। ओके, सो विथ मी यू स्टार्ट टू राइट 1 अप्रैल 19 asset. What is this? This is like a balance sheet. It is not exactly a balance sheet, it is like a balance sheet. Okay, cash at bank 6000. Should you worry about adjustment on 1 April 2019? Never. Second problem, third problem, fourth problem, never. Adjustments don't happen on the first day. They happen when time goes by. When a marriage happens, marriage, husband, wife, things change. But not on the first day. But yes, 10 days, 20 days, there is a lot of adjustments. थोड़ा हस्बैंड को एडजस्ट करना पड़ता है, थोड़ा वाइफ को एडजस्ट करना पड़ता है, थोड़ा फैमिली को एडजस्ट करना पड़ता है, बट आगे फर्स्ट डे पे नहीं होता। ओके, कैश एट बैंक के बाद क्या है? लेट्स सी, कैश इन हैंड, दैट इज ऑल्सो एन एसेट, 400. कैश इन हैंड also an asset, so I'm writing on the asset side 400. Please write with me. Okay, next we are right now only concentrating on 1 April. We are talking to Jethalal. We are telling तेरे को क्या याद है जेठालाल, थोड़ा यहाँ पे प्रेशर डालो, क्या याद है 1 अप्रैल 2009? उसको जो याद है वो हमको बोल रहा है। स्टॉक इन ट्रेड 1,20,000. It is an asset. Actually, because you're writing on 1 April, this is which stock? Opening stock. I repeat, if you ask me or anybody would ask me, so that is which stock? Is it opening or closing? I'll say it is opening because it is of the first day. First day. Okay. Next, sundry debtor. Customers. Every shop has customers. Opening first 20,000. 20,000. Asset side. Sundry debtor. Customers. 20,000. So very simply, I'm writing the entire list. Next, equipment. Every shop has equipments, small equipments, big equipments, 16,000. Now, if you ask me, sir, what about the depreciation? Then I will tell you, on the first day, why are you worrying about depreciation? It never happens on the first day. It happens after the first day. Meaning, in this sum, on the last day. So equipment is 16,000. Next, sundry creditor. Hold on. ये एसेट नहीं, ये लाइबिलिटी है। हाँ, तो लाइबिलिटी साइड पे लिखो ना। लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी साइड पे लिखो, बट ध्यान देना फर्स्ट लाइन में मैंने क्या लिखा है, आप भी लिखो फर्स्ट लाइन में, कैपिटल ओपनिंग। प्लीज फर्स्ट लाइन में लिखो कैपिटल ओपनिंग, उसके बाद लिखना सन्ड्री क्रेडिटर 30,000। इफ यू आस्क मी सर फर्स्ट लाइन में क्यों कैपिटल लिखा, देन मैं आपको बोलूंगा मैंने ये हमेशा किया है। कोई भी बैलेंस शीट ले लो, उसके लाइबिलिटी के फर्स्ट लाइन में हमेशा मैंने कैपिटल लिखा है। ओके, इनफैक्ट उसके नीचे माइनस ड्राइंग्स भी आता था, बट उस ड्राइंग्स की जरूरत नहीं है, कैपिटल आपको लिखना है। ओके, खाली है, कैपिटल खाली है। उसके बाद में लास्ट का आइटम फर्नीचर 20,000, ये एसेट है।
फर्नीचर एसेट है तो एसेट साइड पे जाते हैं और लिखते हैं furniture 20,000. And now guys and girls please write this and let me explain to you the purpose. मतलब सर ये किया हम लोग ने, ये क्यों किया, why did we do it? well ऐसा है my dear कि अकाउंट्स में, प्रॉपर अकाउंट्स में एक फॉर्मूला है, कैपिटल का फॉर्मूला. हाउ डू यू फाइंड कैपिटल? एसेट 1 2 3 4 5 6 minus liabilities. Oh, so if I add the assets and if I subtract the liability, I will get capital. Yes, you will get capital. What is capital? Jethalal's contribution in his business. That's capital. Okay, but how to find? जेठालाल को हमको बताना है तो हमको asset minus liability करना है. So I repeat, girls, boys, what are we doing? एसेट का टोटल हमेशा हैवी है. अच्छा, मतलब आई एम टेलिंग यू 1,82,400 उसको लाइबिलिटी में भी लिखो. एंड यू गाइस डू वन फेवर फॉर मी. एसेट 1,82,400 minus 30,000 मीनिंग माइनस लाइबिलिटी. हाउ मच इज इट? व्हाट इज इट? कैपिटल, बिकॉज इट्स द फॉर्मूला फॉर कैपिटल. एसेट subtract liabilities, and that is exactly what you are doing in statement of affair. Total of asset minus total of liability. I repeat, please करो. उसका क्या काम आएगा वो थोड़ा टाइम रुक जाओ, बोलता हूं मैं. आज के ही लेक्चर में मुझको बोलना है. So I repeat, single entry is very weird style of accounting. It is not the proper style of accounting. So at the very beginning right now things are very suspense to you. So you will be like, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, what is the purpose of it? Just hold on. So the answer that you have given me in the comment box, 152,400. Very important. Where to write? What is it? That is capital, opening capital, owner's money on the first day. So I'm just putting a circle and writing 152,400. Please do so. Okay. So guys, क्यों बनाया ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर? जो बैलेंस शीट है. अरे कैपिटल ढूंढने के लिए. तो क्या किया हम लोगों ने ना, एसेट लिखा, लाइबिलिटी लिखा, फिर सबट्रैक्ट किया, तो हमको कैपिटल पता चल गया. क्या करूं वो ओपनिंग कैपिटल का? उधर से, ओके, मेरे पीछे दिखता है तुझको ओपनिंग कैपिटल. आई रिपीट, ये ओपनिंग कैपिटल. तो उधर से इधर लेकर आ. वेरी सिंपल, मैंने एरो बना दिया. लेट मी, अगर मैं शिफ्ट कर सकूं तो चलो, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं. आई होप यू कैन सी दैट. ऊपर से नीचे जो एरो है वो पॉइंट कर रहा है जेठालाल कैपिटल अकाउंट. आई रिपीट, व्हाट इज दिस अकाउंट? दिस इज जेठालाल्स कैपिटल अकाउंट. Whatever happens with Jethalal's money is recorded in this particular account. We are trying to find out what is Jethalal's capital on the first day. Then we'll try to find out what is Jethalal's capital on the last day. That is called as closing capital. So I repeat myself. Everything connected to Jethalal, who is the owner of the business. What is it? His money on the first day, his money on the last day, how much money he bought, how much money he took, that is called as additional capital and drawings. Guys, girls, students, you have done capital, you have done drawings in that, but how have you done it? I repeat myself, तुमने कैसे किया है? Well, मैं आपको याद दिलाता हूँ. होल्ड ऑन करो. अगर आपने मेरे लेक्चर्स अटेंड किए तो आपने ये फाइनल अकाउंट्स का जो है ना, ये डेफिनेटली अटेंड किया होगा. उसके अंदर आपको याद होगा कि बैलेंस शीट में कैपिटल आता है और उसमें ड्राइंग्स माइनस होते हैं, कभी और ड्राइंग्स माइनस होते हैं, कभी और माइनस होता है. और वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें ना प्रॉफिट भी आता है. ये हमारा टारगेट है, प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द सम. बट हम लोग ये नेट प्रॉफिट
कहां से आता है प्रॉफिट एंड लॉस? कैन यू प्रिपेयर इट इन सिंगल एंट्री? नो, यू कैन नॉट प्रिपेयर इट. देन हाउ डू आई फाइंड दिस प्रॉफिट? होल्ड ऑन. दिस प्रॉफिट somewhere comes besides capital. Wherever you write capital, somewhere in that capital, left right, you will have a look at profit. दिखेगा आपको प्रॉफिट. एक मिनट, ये 50,000 क्या था? ये था फर्स्ट कैपिटल, इसको कहते हैं ओपनिंग. और फिर ये आंसर आया ना 90 to 90, ये क्या है? ये एंड का कैपिटल है, इसको कहते हैं क्लोजिंग. हाँ, तो जो मैंने जेठालाल का बनाया ना, उसमें भी मैंने लिखा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग. सो आई रिपीट, समवेयर इन बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग. आई विल आस्क यू गाइस, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, friends, everybody, a very simple question. If you, whenever a businessman comes to his shop, early morning, he opens the shutter. From his pocket, he removes some money. Okay? A big bundle of cash. Example, 1,000 rupees. He puts it in his drawer. Barabar? Okay. Just a minute. I'll come back to my position. I'm not sure why this is happening. Right. So when the businessman, example, you puts 1,000 in his box, at the end, if that 1,000 in the night, when he's going home, when he puts the shutter down, he removes the money, he has got 1,500. सुबह सुबह को उसने 1,000 डाला, शाम को जब उसने पैसे निकाले 1,500 हो गया. कैन यू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स 500 मैजिक हुआ? कैन यू टेल मी व्हाट इज द रीजन फॉर 500? एनीबडी? रीजन फॉर 500? डिड लाइक अ मैजिशियन, टोपी निकालो, अंदर से रैबिट बाहर आएगा. एक नोट लिया, फाड़ा, उसका 2 नोट किया. Does business depend upon magic? What happened? 500 रुपया कहां से आया? एक्स्ट्रा क्या हुआ at the end of the day? Anyone has any idea? If you start a business, in the morning you put 1,000, in the evening you remove 1,500. That 1,000 has become 1,500. मेरा रीजन आपसे ये है कि 500 रुपया कहां से आया? चोरी किया आपने किसी से? Anyone can guess? What is the reason for the capital to increase from 1,000 to 1,500? What does, somebody said in the comment, overdraft. No, that would not be correct. Please look at the second comment. Profit. Everybody, एक बिजनेसमैन क्यों करता है बिजनेस? प्रॉफिट कमाने के लिए. कैसे पता चला प्रॉफिट? सुबह को मैंने इतने से स्टार्ट किया था, शाम को इतना हो गया. तो ये इतना कैसे हो गया? मैंने प्रॉफिट कमाया. जो मैंने लिया था 1,000 के लिए, मैंने 1,500 के लिए बेचा. तो मैंने ज्यादा बेचा ना, हाँ, तो प्रॉफिट कमाया. सो एवरीवन, दोज जिन लोगों ने कमेंट नहीं किया, बिकॉज मे बी ऑल आर कंफ्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं. प्लीज नोट, एक बिजनेसमैन का जो शुरुआत का कैपिटल होता है और जो एंड का कैपिटल होता है, उसमें फर्क होता है. अगर वो कैपिटल इंक्रीज हुआ तो क्यों इंक्रीज हुआ? प्रॉफिट के वजह से. बिकॉज प्रॉफिट यू गिव टू द बिजनेसमैन, ओनर, रख, तेरा प्रॉफिट है, रख. बट कभी कभी उल्टा भी होता है. कैपिटल इतना था, इतना हो गया, कम कैसे हो गया? लॉस हो गया रे. हाँ, the difference in profit, opening and closing, helps you find profit or loss. Therefore, in this chapter, we are trying to concentrate on what? On finding that difference in profit. So, we are preparing an account called as capital. In that capital, we are writing opening capital and we are writing closing capital, and we are trying to find how much is opening capital.
तो पता चला ना हम लोग को, देखो ओपनिंग हम लोग ने लंबा वर्किंग किया, बट हम लोगों को इसका आंसर पता चला। कितना है ये? 152,400। आई रिपीट 152,400। देन हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेरे आसपास है ना कैपिटल अकाउंट, इसमें ये है ओपनिंग कैपिटल, ये है एडिशनल कैपिटल, ये है ड्रॉइंग्स और ये है क्लोजिंग कैपिटल। एवरीथिंग कनेक्टेड टू कैपिटल हम लोग इधर पूरा लिखेंगे। फिर ये अकाउंट के अंदर हम लोगों को या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस, वो देखते हैं कैसे आएगा। वी आर ट्राइंग टू फिल। एक आ गया हमारे पास ओपनिंग कैपिटल। ओके, नाउ क्या करेंगे, अभी हम लोग ये पूरा लिस्ट वापस पढ़ेंगे, पर अभी हम लोग 31 मार्च 2020 का पढ़ेंगे। प्लीज बी विथ मी, हाँ बी विथ मी। व्हेन आई रिपीट दिस द नेक्स्ट टाइम तुम थोड़ा और कंफर्टेबल रहेगा। ओके, रिपीटिंग द लिस्ट अगेन, बट नाउ 31st March. First we completed 1st April, now we are completing 31st March. Okay, please read about cash at bank 13,000. अभी 1st April मत पढ़ो, ओके? हाँ, तो क्लोजिंग में आ जाओ। Cash at bank 13,000, outer column. I hope you can see there are two columns. Why is there two columns? Because now adjustments may come. So we have an inner column for that. Next, cash in hand 10,000, asset. If you are someone who is thinking, why is cash in hand an asset? Then by you don't know final accounts. Final accounts नहीं पता है तो तुमको सिंगल एंट्री नहीं समझ में आएगा, डिफिकल्ट होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा। अगला स्टॉक इन ट्रेड, हाँ तो एसेट है, इनफैक्ट ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग। ओके, एसेट साइड पे अपन लिख देते हैं द वर्ड स्टॉक इन ट्रेड। ट्रेड मीन्स बिजनेस, बिजनेस शॉप। 1,36,000। नेक्स्ट, सन्ड्री डेटर, कस्टमर 50,000, कस्टमर 50,000, एसेट सन्ड्री डेटर 50,000। वी आर गोइंग एकदम लाइन में जा रहे हैं। पहले हम लोग ने ओपनिंग कंप्लीट किया, अभी हम लोग क्लोजिंग कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट, इक्विपमेंट 16,000। देखो लिखो, बट याद रखो कि एक एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम में लिखो। फिर क्या करो, एक लाइन खाली रखो, जैसे आप नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स में करते हो, एक लाइन खाली रखो। नेक्स्ट, क्रेडिटर 20,000, लाइबिलिटी में लिखो, बट फर्स्ट लाइन में कैपिटल के लिए जगह रखो। सो आई होप आपको वो दिखता है। ओके, कैन आई मूव दे, गड़बड़ हो जाता है हमेशा। ये ऊपर ऊपर, ओके, तो ऊपर लिखो सन्ड्री क्रेडिटर 20,000। ओके, नॉट श्योर व्हाई। सो वो हो गया। इसके अलावा एनीथिंग मोर? फर्नीचर 20,000, देयर इज एन एडजस्टमेंट, तो लेट मी डू दैट। लीव वन लाइन, लीव वन लाइन। Now the list is over. So can I finish closing statement of affair? No. Q, because the depreciation is not done. Okay, so I repeat, I cannot finish closing statement of affair. Leave, keep it on hold, keep it on hold. What is there next? Okay, please read next. During the year, come down, Jethalal introduced 3,000 as further capital. Hey, इसको क्या बोलते हैं फर्दर कैपिटल को? माय डियर, इसको बोलते हैं जो मेरे पीछे है एडिशनल कैपिटल। जेठालाल दे रहा है ना, क्रेडिट द गिवर, इसके लिए ऊपर है क्रेडिट, क्रेडिट, तो इधर लिख एडिशनल कैपिटल, फर्दर मनी। How much? 3,000 here, 3,000.
You may ask me, sir, this is written once. What about the second time? Okay, it is written once. What about the second time? Then I would tell you, my dear, what is the name of the chapter? Single. Everything will be once. You cannot do double, otherwise that becomes double entry and you can't do. वो हो ही नहीं सकता ये चैप्टर में, वरना चैप्टर का नाम ही डबल एंट्री होता. ओके, सो यू विल ओनली राइट वंस. ओके, नेक्स्ट क्या है? दे से he bought 3,000 but he also withdrew 5,000 as drawings. हाँ, तो हम लोग को पता है ड्राइंग्स कहाँ पे लिखने का. अरे ये देखना, ड्राइंग्स ये गाड़ी के थोड़ा ऊपर है. ओके, तो ये ड्राइंग्स यहाँ पे लिखो 5,000. कितनी बार लिखने का? वंस, सिंगल, वंस. क्योंकि डेबिट में क्यों लिखा तुमने? अरे डेबिट द रिसीवर, ओनर जेठालाल रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर. अभी क्या गायब है? ये गायब है, क्लोजिंग कैपिटल. ये हम लोग को ढूंढने का है. ऐसा कैसा ढूंढने का? पढ़ो, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो. राइट ऑफ डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर एट 10%. अरे यू हैव डन दिस 15 टाइम्स. 15 बार तो किया है तुमने फाइनल अकाउंट्स में. फर्नीचर में जाओ, इधर है फर्नीचर. 10% माइनस कर. कैसे? जैसे तू फाइनल अकाउंट्स में करता था. मैंने बोला तुझे फाइनल अकाउंट्स पता है, तो तुझे ये चैप्टर पहले से पता है. यू नो 50% ऑफ दिस चैप्टर. ए, हाउ डू यू गेट 10%? सिंपल, रिमूव द लास्ट जीरो. ओके, सो यू विल गेट 2,000. यस, देन द आंसर 18,000. Is it over? Yes, it is over. But what about second effect? My dear, don't ask that question. What is the name of the chapter? Single. You will do things singly. There is no two things. There is no second effect. Okay, चलो थोड़ा थोड़ा भी तुमको समझ में आता रहेगा कि सिंगल एंट्री का क्या बवाल है. And on equipment at 5%. Equipment at 5%. Okay, so equipment 5% I have to calculate. So let me write that. And my request to you, can you please in the comment box tell me how much is 5%? It's the first chapter, it's the last chapter, but the first lecture. So I have not asked you many questions because my main intention was to explain कि कर क्या रहे, which is a lot weird. एकदम अजीब तरीका है ये चैप्टर सॉल्व करने का. मुझको 5% चाहिए इक्विपमेंट का. अगेन 10% 5% ढूंढने में तुमको कोई पहाड़ तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मेंटली कैलकुलेशन हो जाता है. अच्छा, एक आंसर आया है 800. एनीवन एल्स? आपके पास आंसर होगा? ओके, सरप्राइजिंगली काफ़ी टाइम लग रहा है. हाँ, 800, दैट शुड नॉट टेक अ लॉन्ग टाइम. 15, 200. सेकेंड इफेक्ट डेप्रीसिएशन का चिंता मत करो, क्योंकि कितनी बार बोलूँ, सिंगल एंट्री का चैप्टर है. अच्छा, इसके बाद कुछ नहीं, क्वेश्चन खत्म हो गया. इसके बाद कुछ नहीं, क्वेश्चन खत्म. पढ़ो. प्रिपेयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड ऑल्सो स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस इन द year ending. अच्छा, I'll finish the question in some time, but एकदम important चीज मैं बताना भूल गया. What? This chapter, single entry, ये 2 साल पहले 12th standard को था. HSC 12th standard, important 12th standard. Then they removed it from 12th standard and they brought it to 11th. हाँ, so do remember that unfortunately this year has been weird. But this chapter was very important because it used to come for 8 marks in 12th standard. This chapter also comes in 13th standard. If you go to further educate yourself after 12th standard, there is a 13th standard. And if you take BCom, then this chapter is repeated once again. That is the reason I'm at least teaching you that much, by which you have an idea about single entry. Right now I've read this question. Everything in that I have done once, single. Now what do I do? Now you close the closing. You close.
अच्छा, so asset is heavy, yes, always heavy, always heavy. So let's find the total. 2,42,200. Then from that asset total, you minus 20,000, because what are you doing? You are doing asset minus liability. What will you get? My dear, ये जो ऊपर है ना कैपिटल, आपको ये मिलेगा. तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में वो काम कर दो मेरे. 2,42,200 में से आप लोग 20,000 माइनस करो, और जो कमेंट आप दोगे वो होगा क्लोजिंग कैपिटल. तो लास्ट में ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्यों बनाया? ओपनिंग कैपिटल ढूंढने के लिए. क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्यों बनाया? क्लोजिंग ढूंढने के लिए. क्योंकि वो कैपिटल्स जो है ना, मैंने आपको लेक्चर के बीच में बताया था कि कैपिटल में बीच में जो डिफरेंस आता है वो नॉर्मली प्रॉफिट का डिफरेंस होता है. ओके, आपने ऑलरेडी मुझे जवाब दे दिया. 2,22,200. आई होप यू कैन सी द एरो. उधर से पिकअप करो और यहां पे लेके आओ. ये क्लोजिंग का लाइन है, ये क्लोजिंग का लाइन है. 2,22,200 here. Now be with me. अभी थोड़े टाइम में ये गाड़ी हम लोग को चलाने का. We have completed the capital account. जेठालाल capital. This is capital on first day opening. This is new capital, additional. This is money taken away, 5,000, and this is the remaining money, 2,22,200. Now this account, let me finish it for you, everybody. This account, let me finish it for you. Be with me, very simple, be with me. So my position is shifted. Now what to do? Let us finish this Jethalal capital. The credit, I hope you can see, 152,400, 3,000. So it is 155,400. Okay, but the debit is heavy. Yes. How much is the debit? 227,200. Can you please do that? Okay, I'm used to looking at this direction, but I have to look at this direction now. Okay. Acha, so the debit is heavy. Then what is the difference on the credit side? My dear, ये जो 227,200 है ना, इसमें से ये जो क्रेडिट का टोटल है वो क्या है? 155,400 माइनस कर. तो ये जो मिसिंग नंबर है वो तुझे आएगा. आप मेरे को कमेंट बॉक्स में प्लीज बताओ कि ये मिसिंग नंबर कितना है. आई रिपीट, पहले ओपनिंग स्टेटमेंट को आपने फिनिश किया, आपको ओपनिंग कैपिटल आया. फिर ये क्लोजिंग स्टेटमेंट को फिनिश किया, क्लोजिंग कैपिटल आया. अभी उसके हेल्प से कैपिटल में जो डिफरेंस आ रहा है वो आप ढूंढ रहे हो. तो आई रिपीट, हाँ, देयर इज वन आंसर इन द कमेंट बॉक्स, बट एनीवन एल्स कैन ऑल्सो गिव देयर आंसर, which if it is the same, it should be correct. $71,800. So great. What is this, my dear? This is the answer of the chapter. And what is that? Net profit. How did you find net profit? We did not do trading account. We did not do profit and loss account, but we still found out net profit, because you should know that net profit from profit and loss account goes to the capital. So somehow, okay, कहते हैं ना, अगर ऐसे नहीं खा सकते तो ऐसे खाने का. अगर see you find out a जुगाड़, इंडियन स्टाइल जुगाड़, कि इतना लंबा फाइनल अकाउंट्स कौन करेगा, ये शॉर्टकट में अपन ने कर लिया, ये शॉर्टकट में हम लोग से हो गया. ना होल्ड ऑन. The professor, your teacher, okay, they don't give you marks for capital account. Capital account is rough work, 0 marks. Everybody 0 marks. You may say, "Arey sir, then why did you prepare this capital account?" Because I have to tell you how do you solve capital account in this statement showing profit or loss. So I repeat, what is the teacher telling you? I don't want capital account. I don't want the answer.
in capital account. I want the answer of profit in statement showing profit or loss. Okay, then what to do? You convert the capital which is debit credit into a statement. Statement में क्या होगा? Plus minus. I repeat, convert this capital into a statement. How do you do that? By driving this car. Hold on. How do I drive this car? You see, you will start with closing capital. So please note ना, ध्यान देना. You will start with closing capital. गाड़ी यहाँ पे है ना, and you want to drive it to the net profit. I repeat, तू रस्ते के इस तरफ है, तू क्लोजिंग कैपिटल के पास है, तुझे जाना है नेट प्रॉफिट तक. तो यू जस्ट कांट टेक दिस कार एंड लाइक अ रोहित शेट्टी फिल्म, ये डिवाइडर पे चढ़ा दो. नहीं, यू कैन जस्ट गो अक्रॉस द डिवाइडर. यू हैव टू ऑनेस्टली टेक अ यू टर्न. अच्छा, यू टर्न मतलब ये गाड़ी पहले ऊपर जाएगा, फिर यू टर्न लेगा और फिर नेट प्रॉफिट तक पहुंचेगा. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. देख, ये गाड़ी पहले ऊपर जाएगा, यू टर्न लेगा, फिर नेट प्रॉफिट तक आएगा. हाउ डज दैट लुक माय डियर? आई एम शोइंग दैट टू यू. डोंट वरी, दैट इज पॉसिबल व्हेन टीचिंग इज डन लाइक दिस ऑल्सो. सो आई होप दैट वाज वेरी क्लियरली सीन बाय यू. सो व्हाट डिड आई डू? मैंने गाड़ी को यू टर्न कराया. नाउ ऑब्वियसली that's me just speaking childishly, but what does this U-turn mean? This U-turn means गाड़ी जहां से स्टार्ट हुई उधर जो नंबर है उसको आप क्या करोगे? आ रहा है प्लस. डोंट से सर हॉस्पिटल. नो, नॉट हॉस्पिटल. ओके, प्लस. एंड जो ऑपोजिट साइड में है उसको आप क्या करोगे? माइनस. Please note, what are we doing? We are trying to find out 71,800. You would say, but sir, we have already found out. But my dear, capital account is rough work. You don't get marks. So what are we doing? We are converting this debit and credit into plus and minus. So the debit is becoming plus and the credits are becoming minus. How do we start this? We will start it with closing capital. जहाँ से गाड़ी start हुआ, गाड़ी जहाँ से start हुआ. Okay, तो ऊपर first line में please write closing capital as on 31st March 2020, 2,22,200. This account, just a minute. Again, I have to. This account besides me, ये सारी चीजें ऊपर ट्रांसफर होगी, बट ऊपर add less. Add क्या होगा? जो इधर है वो add मतलब ड्रॉइंग्स, और जो इधर है वो माइनस मतलब opening capital or additional capital. Okay, I'll move out from here so these things are visible to you. Okay, let's start. तो closing capital से अपनी गाड़ी स्टार्ट हुई. अभी अपनी गाड़ी ऊपर जाएगी, ड्राइंग मिलेगा. ये ड्राइंग को क्या करने का? ऐड. देखना इतना बड़ा साइन डाला है मैंने. अच्छा चलो लिखते. ऐड ड्राइंग्स कितना? 5,000. हाँ, तो प्लस करके क्या आता है? 2,27,200. यू वुड से अरे ये मैंने सुना है. बराबर ना? देखो ना, नीचे तुमने देखा है, आपने ही किया है. इतना ही क्या ना, द एग्जामिनर डज नॉट वांट कैपिटल में नेट प्रॉफिट, दे वांट स्टेटमेंट में. स्टेटमेंट इज नथिंग बट अ प्लस एंड अ माइनस. ओके, ऐड किया. अभी गाड़ी घूमी, ओपनिंग स्टॉक पहले देखा उसको. हाँ, तो तुझे माइनस करना पड़ेगा. ओके, नो प्रॉब्लम. ऊपर लिख देता हूं. Less opening capital as on 1st April 19. How much? 152,400 minus. I'll minus it. 74,800. Closing capital से start हुआ, ऊपर गया तो पहला पैसेंजर मिला, प्लस किया, फिर घुमाया ओपनिंग कैपिटल, बट वो ऑपोजिट साइड पे था तो माइनस किया. उसके नीचे एडिशनल कैपिटल, वो भी तो ऑपोजिट साइड पे है. अच्छा, तो वो भी माइनस. लेस एडिशनल कैपिटल 3,000. देन योर डेस्टिनेशन, आपका बस डेपो पे पहुंच गया. उस डेस्टिनेशन को क्या कहते हैं?
74,800 minus 3,000. Hey, that's our answer. Net profit for the year. How much is it? See, if you do it, you will get the same answer, which is 71,800. Okay. I am on screen looking a bit weird because this positioning has just changed, and I'm used to staying at that corner of the screen. Okay, so can I go back? Okay, this doesn't happen. So what happened? Your sum just got ended. Very quickly let me recap. सबसे पहला क्या किया? क्वेश्चन पढ़ा, उसके अंदर पहले ओपनिंग एसेट लाइबिलिटी लिखे, ओपनिंग कैपिटल आया, उसको ट्रांसफर किया, क्लोजिंग स्टेटमेंट में आए, क्लोजिंग एसेट लाइबिलिटी लिखे, डायरेक्टली नहीं आया बट एडजस्टमेंट्स करने के बाद क्लोजिंग आया, उसको लिखा, उसके बीच में ड्राइंग दिया था, एडिशनल कैपिटल दिया था, वो हमने लिख लिया, फिर कैपिटल अकाउंट को हमने खत्म किया, एंड देन हमको नेट प्रॉफिट आया. बट अनफॉर्चुनेटली ये चैप्टर में कैपिटल अकाउंट रफ वर्क है, वो मार्क्स नहीं देते, वो मार्क्स देते हैं स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस. तो यही कैपिटल को हमने प्लस माइनस में कन्वर्ट किया. हमेशा आपकी गाड़ी शुरू होगी क्लोजिंग से और फिर खत्म होगा नेट प्रॉफिट पे. कभी कभी नेट लॉस भी आ सकता है, पॉसिबल. ओके, बट डेबिट में जो आया वो प्लस, क्रेडिट में जो आया वो माइनस, एंड दैट्स इट. यही आंसर हमको ऊपर आ गया. ये एक सम है सिंगल एंट्री का. ऐसे ही सम आने वाले 2 लेक्चर्स में मैं करूंगा. सो अप्रोक्सीमेटली 3 lectures is what I am dedicating for single entry, such that you know something about single entry and just like the first chapter of rectification. Okay guys, this is it for me for the day. I hope you are copying work is over. What to do? Nothing else. It's time that I call this chapter to an end, well, this lecture to an end, and I remind you, please do take care of yourself, take care of your seniors and juniors. घर पे बड़ों का छोटों का सबका ख्याल रखना. ओके, बड़े बड़े मंत्री लोग, वेल एटलीस्ट पीएम जो चैनल्स पे आके आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ उसको उन रूल्स का पालन करना. डू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस. इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ टेंस सिचुएशन, बट टू कीप थिंग्स इन कंट्रोल, एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स. ओके, अपना ख्याल रखना. दिस इज स्टीवन सर सेइंग अ गुड डे. I will meet you with the same format, almost a similar looking sum in our next lecture. God bless each and every one of you. Good day. Bye for now.